for the rest of the world, I would like you to introduce yourself because क्योंकि इतना नहीं पता चला from what I researched. Yeah, I've kept my personal stuff, I think, private only. But I'm a writer primarily, and I've done like production for Tanmay's YouTube. So, ideation and that sort of thing. उसके अलावा I've written sketches for TV of Timeliners, and before that, I used to intern at AIB as a like I used to ideate in the writer's room. उसके अलावा I've done some marketing campaigns for different brands, and now I'm doing my own stuff. Like I'm freelancing, and I'm trying to like build a YouTube platform of my own, sort of. Behzabad TV is, if I'm not wrong. Deodabad, yeah, Yeah. yes, and personal sketches also on my own Instagram. Yeah, So trying everything at this point. I had seen the coming out of the closet video and I really loved it. I mean, when you released it in March, so I think I was going through a March or April. Uh, Yeah, April. Huh. so I was going through a Yeah. tough phase. I thought, this is going to be emotional and I don't want to watch it. But I watched it last month Uh-huh. and it was really emotional. Oh, nice. So then the podcast is Yeah. basically about ki, art is just in everything. Uh, whatever you do. Yeah. So earlier I used to I did a podcast with Anish called The Art of Marketing. We talked about how marketing has a lot of art. So today's topic is the art of writing. And the first thing that I would like to ask you is, uh, what do you think of art? What is art to you? Uh, I think मेरे लिए art का meaning has changed a lot. Initially, it used to be कि art is your way of expressing yourself. But lately, I've realized कि it's not just that. Like, of course, that is true. But for art to have any meaning, it needs to reach the public also. It needs to. So essentially, then art becomes a medium. Not for your expressions to like a page or like a canvas, but also to the larger public. So it's just a way to communicate to people, and preliminarily it would stop at like what you're putting out on the paper or on the screen. That would be art in itself, and public nahi matter karta. But I've realized ki that's very idealistic, uh, a way to look at art, and art loses any meaning if it's not attached to people. So तो अब मैं थोड़ा वैसे देखता हूँ कि for any art to be considered art, for it to have that sort of an emotion attached to it, it needs to be out there in public. It needs to be understood, and it needs to just make people reflect. Got it. So how do you go on about creating art in your daily life? I have seen that you put out content on Behudabad, put out content on your YouTube channel, and obviously you write. But uh, I think as an individual, art is a part of our daily life that we can't escape. So how do you go about it? I think वही मेरे को अभी this is something that I'm realizing, which is कि uh, it doesn't like मैं अपने खाली टाइम में जो भी बनाऊं, that's my own thing. But if I am to put something out online, no, if I am to put something for people to see, then it should matter to them. So for example, it if I like make a very cryptic piece of work and I put it out there, and ये मेरे साथ पहले होता था कि it was a form of self expression for me, but it wouldn't really reach a lot of people. And मेरे को अभी भी वो वाला art बहुत पसंद है because it helps in the self expression. But then I feel कि it's not helping me connect to people. It's not helping me communicate. And then it's something for me to consider myself. It's not someone else's fault that they're not understanding it. It's something that has to be like taken as a self criticism for what I'm doing. And so now I'm trying to see कि क्या चीज बोलना important है. Like what is more important to say, what is something that I can say in my own way, and which can like reach someone, which can make them think,
and which is also important in their life. It's not noise. So essentially, that's my approach to what I'm making now. Is it should not, it should be, it should be something useful in your life, and it should make you think. Uh, and मुश्किल है क्रैक करना, अब अभी भी फिगर नहीं हो रहा है मेरे को, but I think I'll keep giving it time till I get it, till I get what is that sweet spot of what I want to express and what someone would like to hear. So I have seen that you write a lot. Earlier, it was the Devdabad uh, newsletter. So I was a part of it as well. Hmm. Uh, and you used to write a lot of long form posts on. Basically, you uh, wrote the Behudabad TV as Yeah, a post on Instagram, Behudabad newsletter on yeah, Instagram. So, yeah. and you are also doing some freelance work as a writer. So, oh no, sorry. So maybe Huh? not as a writer, but you write a lot. No, no, I freelance as a writer. Okay, Yeah. okay, perfect. Yeah. Huh. So, what's your approach to writing? Uh, approach to writing थोड़ा specific तरीके से पूछोगे, like in what sense? Approach to like how do I start writing the process, What's the or process here? approach ideologically? Okay, okay. Um, I think different चीजें try कर रहा हूँ मैं. I'm trying sketch writing also, and ad marketing also is a part of it. But primarily I want to write like satires and sketches and like do my own thing. और हर चीज का अलग process है. तो if you're like trying to write a newsletter, तो उसमें there are the beats are different. So for example, you have to start with world building, और मेरे को वो चीज पसंद है ज्यादा than कैरेक्टर आर्क के थ्रू चलना, क्योंकि इट्स अ लिटिल टफर टू क्रैक कैरेक्टर्स. तो मेरे को अगर वीकली कोई स्टोरी पब्लिश करना है ना, तो इट्स इजियर फॉर मी पर्सनली, सबका अपना अलग होता है, फॉर मी टू डू लाइक अ वर्ल्ड बिल्डिंग जिसमें मैं लाइक जियो सांस था. So the goal was to show कि everything can be privatized, and just because something is not privatized right now doesn't mean कि future में you won't be paying for it. So to show air can get privatized. अब वो दिखाने के लिए it was easier for me to show different elements of how this world would come together than like to follow just one character struggle through it. उसमें दो तीन चीजें अचीव हो जाता है. एक तो हीरोइज्म नहीं आता है. हीरोइज्म थोड़ा मेरे को अवॉइड करना पसंद है, बिकॉज heroism in the sense that one person Hmm. will fight against the system and save you, but rather everyone's individual struggles are their own, and together we can do things. तो वो वाले elements explore करना easier होता है when you are like exploring a world which is different from your own but in a lot of ways similar. So that's how I approach my newsletter. What is that one element that we have right now that if it was a little extrapolated in the future, it would radically change how we live. बस उस चीज पे फोकस करके थोड़ा वर्ल्ड क्रिएट कर देना, एंड हैविंग पीपल लाइक अस ओनली डीलिंग विद दोस सर्कमस्टेंसेस, तो एज अ वे टू अवॉइड दैट फ्यूचर. स्केच राइटिंग काफी अलग है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम स्केचेस आर मच डिफरेंट फ्रॉम लाइक राइटिंग स्केचेस ऑन यूट्यूब, बिकॉज 1 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम है. So you can't build up to anything. There has to be a setup and a joke, or sometimes just a joke. Like you can't even like tell people ki, okay, I'm setting up a situation and then I'm gonna make you laugh. Low You have attention to span. start by making them laugh. Yeah, exactly. So I think ये है, Instagram sketches are much, they have to be much faster. Sometimes you can just work on one joke and like exaggerate it step by step. So like वो शारदा यूनिवर्सिटी वाला reel if you've seen. So it's just one joke and you have to escalate it. Uh, And sometimes, yeah, and you just keep it like the world is here को कितना खींच सकते हो, वो हो गया. And sometimes you try to explore a bigger setting through like a reel. तो वो भी अभी मैं फिगर ही कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. Like I think it will take me a few more months to get to just know how this thing works. But YouTube sketches मैंने बनाया है. College में I used to write short films and sketches with
like my college club का friends से था. So I'll share the YouTube channels link with you. Okay. And yeah, so we used to like make movie spoofs engineering college के and so on. So वो सब किया हुआ है. That sketch writing is very different. So we used to make like 12-15 minute videos. Then we'd start by watching a movie like Dangal. Then we draw parallels with engineering college. कि okay, we can show कि जैसे उसको बेटे चाहिए क्योंकि वो रेसलिंग कर लेंगे. यहाँ पे तुम्हारे को कोडर्स चाहिए. Because engineering college में everyone wants to do coding and like not, but उसके civil engineers हो रहे हैं सब. तो इस टाइप का कुछ trope ले लेना and things like that. So I think medium पे depend करता है, but I'm trying to currently explore all mediums that I can. So मतलब I understood your process a little bit, but जैसे एक आइडिया आ गया आपको कि this is an amazing idea, I want to work on it. So what's your first step कि मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, रात को सोते हुए आया मैंने, अभी मैंने हल्का सा Hmm. लिख लिया उसके बारे में, फिर मैं उसको कैसे एक्सप्लोर करूँ, या मैं पहले रिसर्च करूँ उसके बारे में, किसने पहले किया है या नहीं किया है, रेफरेंसेस देखूं, या फिर मैं सीधा जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिखना चालू करूँ? I think again सबका अपना होता है. मेरा तो यही है कि I don't for फॉर जिसमें रिसर्च चाहिए ना, जैसे बेहुदा बात में काफी चीजों में रिसर्च चाहिए रहता है, तो देन आई वॉच व्हाट ऑल हैज बीन मेड ऑन दीज टॉपिक्स. सो आई डोंट रिपीट व्हाट्स ऑलरेडी देयर. आई कैन जस्ट ऐड दोस लिंक्स इन व्हाटएवर आई एम मेकिंग, एंड किसी को और जानना हो तो दे कैन गो देयर, बट आई एम सेइंग समथिंग न्यू. तो बिकॉज वो 2018 में बोली हुई चीज होगी एंड द वर्ल्ड हैज चेंज, सो मे बी यू कैन कंट्रीब्यूट सम मोर. तो ऐसा रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स में आई चेक व्हाट अदर्स हैव डन, बट जो स्ट्रिक्टली थोड़ा क्रिएटिव वर्क होता है ना, that's basically for me to self express and connect. So उसमें I just do my own thing, and I don't go out looking कि किसी ने कुछ बनाया होगा. Sometimes for inspiration I have my own like favorite shows. I love watching SNL, primarily because they take insights, and they make a really nice sketch around it. उनके jokes जैसे भी हो, the way they treat an insight is, I love how they do it. So I'll give you an example. um, there's a sketch that I really love of theirs, in which it's a game show, okay, and the game is that you'll get $1 million if you can guess the name of this person, and they show you like a celebrity ka face, and you guess the name, and then they show you your doorman, like your doorman comes, or your society security guard comes, and you don't know their name, and since you don't know it, you lose $1 million. And तो ये बस एक insight था that people who you meet in your daily life, who like take care of you, उसके उनके नाम नहीं पता होते most लोगों को, but they'll know these people who don't give a shit about them and so on. The way they showed it was to me very interesting. Like even with like $1 million at stake, someone introduced themselves. Like my name is Rajesh or whatever, and I'm your security guard. And he comes back after like 2 rounds again, and again they're asked, "Do you remember his name? He just told you," and still they don't know, and they lose 1 million for it. So वैसा I like the treatment that this simple insight से उन्होंने क्या अच्छा 6 मिनट का solid sketch बनाया. So I watch SNL जैसे sketches, and then उससे बस वो मिल जाता है, motivation मिल जाता है कि I also want to do something like this, write something like this, and that is, so उससे बस inspiration ले लेता हूँ, वो feeling, and then I write my own thing if I have ideas. गॉट इट. सो आजकल मैंने देखा जैसे कंटेंट के अराउंड ही कि सो अगर मेरे को पैरोडी बनानी है तो रिक एंड मॉर्टी की तरह, या पहले एआई भी जैसे करता था, या जैसे आपने बताया आप करते थे, कि ऑनेस्ट हो रहे हैं बिल्कुल ही, यू नो Hmm. even in every instance we will be blatantly honest, we'll tell the truth and then go about whatever we are doing. So do you think कि ये काफी एक्स्ट्रा हो रहा है and people need to explore something else? ऑनेस्ट तो आई थिंक अभी तो कम हो गया है. आई थिंक रील्स तो एक बहुत ही अलग जॉनर ऑफ कॉमेडी लेके आया है, which is like it's a very low budget aesthetic रहता है. For a reel to work, it has to be very like low effort, दिखना चाहिए चाहे जैसा भी हो. And
आई थिंक दैट हैज मेड, अब क्योंकि वो प्रोडक्शन चॉइस है ना, तो वो राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होने लग गया है. तो यू सी पीपल being very self aware that they are making jokes and that they are not taking things seriously. वो कंटेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो आई थिंक वो जो एक्स्ट्रावेगेंट स्केचेस होते थे ना विद अ लॉट ऑफ सेटअप एंड अ लॉट ऑफ इलेबोरेट राइटिंग, वो कम हो गया है काफी ज्यादा ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब. So I think this is already slowing, but it's not because people don't want to watch those, but rather because a particular algorithm, there's a particular thing that is being pushed to us more. तो ऐसा नहीं है कि एपेटाइट कम है उसका ऑनेस्ट स्केचेस का या किन्हीं और स्केचेस का. आई जस्ट फील कि मीडियम जो है वो थोड़ा ज्यादा चेंज हो गया है. इवन यूट्यूब पे अब शॉर्ट्स आ गया है, तो गोल कुछ बदल गया है मीडियम का. तो इट्स दैट. बट आई एम लाइक टीवी पे तो अभी भी स्केचेस चलता है फॉर एग्जाम्पल. सो वो ऑडियंस कहीं नहीं गया है, बट एक नया ऑडियंस क्रिएट हो रहा है. एंड This इट्स फॉर audience अस टू wants to नेविगेट. this audience wants to मतलब relate with the content ki, if I am a certain I'm at a certain level of income, I'm earning this level of income, that person is also like me. So या फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नॉर्मल मिडिल क्लास हूँ, 25-20 हजार रुपए कमा रहा हूँ, तो वो बंदा भी मेरे जैसा ही है, बट वो कंटेंट बना रहा है और मेरी सिचुएशंस के अराउंड बना रहा है. राइट, या रिलेटेबिलिटी इज अ, ऑल्दो मेरे को नहीं समझता है ये वाला पूरा चीज ना, बिकॉज ये वाला जो कंटेंट है ना, टाइप्स ऑफ पीपल वाला, वो मेरे बिल्कुल लाइक आई डोंट फाइंड इट फनी, आई डोंट engage with it, and I can't make it. So for some reason, रिलेटेबल कंटेंट मेरे को इतना नहीं पछता है जितना एब्सर्ड हो गया थोड़ा, या फिर यू नो सम कॉमेडी दैट रियली टेक्स मी बाय सरप्राइज इज व्हाट मेक्स मी laugh. And this has been true for quite a few years now, which is I used to love AI because they did not make ये वाला content, types of people you find during Holi or Diwali or वो सब. Because I get it, 5 types of people exist in this world and you can put them in any situation. So, और वही relatable insights wise also, I feel कि for me personally, memes are a better medium to relate, or tweets are a better way to get that joke. If I'm making a sketch or if I'm watching a video, I find it like अगर कुछ absurd हो जाता है या फिर कुछ ऐसा flip हो जाता है extraordinary, that makes me laugh more, and that is why I also like inclined towards content, making content like that. Yeah, aspire towards making content like that. So I mean, I don't know if you know these guys, but there are these two guys called Mohammad Anas and Sufiya Junaid. I don't know the pronunciation. These are like Yeah, I know. absurd comedy. I love their content. Yeah, I love their content. And Anas का, या वो जो एग्जैक्ट रील नहीं याद आ रहा मेरे को, ऑस्कर्स वाला. लाइक आई लव हाउ ही एक्सप्लोर डिफरेंट सेटिंग्स. वही है, एसएनएल जैसा करता है वो काफी ज्यादा, where he'll take insights which are relatable, but he'll give them a very nice, treatment, and that I love what Anas does. there's this guy called Shehzad. तो उसका भी इंस्टाग्राम पे है, तो शहजाद शो. तो इंस्टाग्राम पे ही इज कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, एंड रैंडम कॉमेडी, इट्स लाइक he's tripping. But on his YouTube, I saw a video called The Art of, where he explores Okay, कि झाड़ू लगाने में भी आर्ट है, कला है. मतलब आर्ट तो हम right, इंग्लिश में बोलते हैं और कला yeah, हम कहीं पे भी बोल देते हैं, भाई ये तो कला है, yeah, जो कर रहा है कला है. तो true. वो एक्सप्लोर करता Hmm. है, एंड आई जस्ट लव हाउ ही डज इट with the visuals, with the So nice. audio. मेरे साथ लिंक शेयर करना, आई लव टू वॉच. Definitely. तो मतलब अगर मैं आर्ट की जगह अगर मैं कला बोलूं, तो आपके लिए मीनिंग चेंज होता है या हम्म. सेम रहता है? आई गेट इट, मतलब मैंने यूज नहीं किया ऐसे, बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. आई थिंक कला को स्किल से भी जोड़ता हूँ मैं. हम्म. एंड आई थिंक इंडिया में ऐसा थोड़ा फ्यूज्ड रहा है, बिकॉज फैमिलीज कुछ स्किल्स पास ऑन करते थे ना वो कास्ट के थ्रू. तो लाइक इफ यू आर अ पॉटर और अ वीवर और अ पेंटर, तो आपका फोर फादर्स भी रहे हैं, तो वो स्किल भी था. और
हम लाइक कंज्यूमर के लिए आर्ट भी था, तो मेरे को समझता है कि कला वर्ड दोनों जगह क्यों यूज होता है इंटरचेंजेबली, तो मेरे लिए मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है। आई गेट इट, लाइक इट इज अ स्किल ऑल्सो एंड इट्स कंज्यूमेबल, सो इट्स आर्ट ऑल्सो। यार मैं आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब क्वेश्चंस मेरे ना थोड़े से कम हो रहे हैं, बिकॉज मैंने सोचा था हाँ कि ओके। आई जस्ट बी इम्प्रॉम्प्टू विद यू। हाँ ओके। लेट मी जस्ट ठीक थिंक। है, आराम से, हाँ, बात भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा। फिर मतलब मेरे साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि अ, मेरे को एक आइडिया आया, मैंने वो लिख भी हम्म। लिया अभी, एक मतलब बहुत ही सॉलिड आइडिया, हम्म। उसको मैं बनाने बैठता हूँ तो, और स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने बैठता हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कैसे जाऊं उसके लिए। एंड मतलब फिर हो जाता है कि अगर मैं ऐसे कर लूँ तो शायद ये हो जाए, ये बेटर रहेगा, हम्म। सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ। तो हाउ डू यू गो अबाउट हैंडलिंग योर सेल्फ, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद योर सेल्फ? आ, ये मैं अभी डील कर रहा हूँ इससे, बिकॉज आई डोंट हैव अ बॉस एनी मोर, राइट? आई एम जस्ट फ्रीलांसिंग एंड आई एम डूइंग माई ओन स्केचेस, सो आई हैव टू फिगर आउट स्टफ बाय माई सेल्फ। आई कांट आस्क एनीवन कि मैं कैसे करूँ, what is the right way. I have to figure my own right way. So I'm like dealing with this a lot. And just like if you see my like, yes, just look at this. If you can see, all these are just notes that I've made for. Wait, I'll show you. Uh, ये मत दिखाना एक्चुअली, इसमें कुछ मेरा पर्सनल फोटोज दिया है, बट जस्ट दिस, ये इसमें लिखा हुआ है कि राइटिंग कैसे करना है अगर स्टक फील करो तो, ये इफ फीलिंग स्टक का नोट्स है, एंड ये टू डूज है, ब्रेक डाउन कर रखा है। तो ये आई एम जस्ट ट्राइंग दीज थिंग्स कि सीन की क्या वर्क कर जाए मेरे लिए। व्हाट वन थंब रूल दैट आई फिगर्ड इज कि स्क्रिप्ट लिखना है ना, एंड आई एम फीलिंग स्टक, तो स्क्रिप्ट लिखना फील लाइक अ बिग टास्क, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल सब टास्क। तो एंड थोड़ा वैसे सोचो कि व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन राइटिंग अ स्क्रिप्ट। ये चीज थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आएगा, बट ऑल्सो जस्ट बाय वॉचिंग। तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले यू विल हैव टू लाइक फिगर आउट, मेरे लिए बीट्स इंपॉर्टेंट रहता है कि इफ इट्स लाइक अ स्केच, 1 मिनट स्केच, तो 3 से ज्यादा बीट्स नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम पे इतना से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। बीट्स मतलब अभी इस पोजीशन पे रहेगा स्टोरी, फिर समथिंग एल्स विल हैपन, देन समथिंग एल्स विल हैपन। तो आई नो द बिगिनिंग एंड आई समटाइम्स नो द एंड, एंड आई हैव टू फिगर बीच में क्या क्या होगा। अब वो वेगली पता चल गया, अब वो ईच पार्ट में आई नीड टू नो क्या क्या एलिमेंट्स जाएगा, दैट ओके फॉर दिस पार्ट टू बी देयर दीज टू कैरेक्टर्स नीड टू बी देयर, या फिर दिस प्रॉप नीड्स टू बी देयर। अब वो लोग का इंटरक्शन फिर डायलॉग से आएगा। सो आई थिंक डायलॉग कम्स लास्ट, और ये जनरली लार्जर स्क्रिप्ट राइटिंग में भी ट्रू रहता है। एंड सबसे पहले फॉर मी बीट्स वर्क, देन सेटिंग कैरेक्टर्स, एंड देन फाइनली डायलॉग। और ऐसा जब व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इनटू सब टास्क्स, नो, इट गेट्स इजियर। तो वो लेस इंटिमिडेटिंग लगता है, एंड समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक डूइंग द बीट्स एंड लेटिंग इट गो, क्योंकि दिमाग में मुझे पता है क्या फनी है, वो वर्बली नहीं आ रहा है, तो मैं बस उतना ही लिख देता हूँ कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, हा हा, एंड देन टू स्टॉप, आज का हो गया। तो समटाइम्स दैट आल्सो वर्क, बट ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर like parts that make the sum. So sometimes also this conflict also happens कि I have a really funny joke, or really something that I am really passionate about, and I have to write it, and also, but at the same time it's an art that I want to show to public, and Right, public might not react very well with it, you know right, either it's uh, because it's not of their interest, or because it conflicts with their beliefs. And right. since you have a socio-political content, how do you Yeah. deal with this? I think पब्लिक जितना बड़ा है उतना ही डाइवर्स भी है, एंड थैंक्स टू इंटरनेट, नो, यू कैन फाइंड योर क्राउड, बाय विच आई मीन कि देयर विल बी पीपल हु फाइंड सिमिलर थिंग्स फनी, एंड रीचिंग देम विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम अभी डालोगे और बहुत सारे लोगों को वो चीज नहीं फनी लगेगी।
उसमें दो लोग को फनी लगेगी, उनके पांच दोस्त हो गए जिनको फनी लगी, दिल शेयर इट। सो दिस, वो पांच लोग अब तुम्हें देखेंगे, एंड दिस स्लो प्रोसेस ओवर टाइम, इफ यू डू थिंग्स कंसिस्टेंटली, विच आई एम नॉट बाय द वे, आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट, but if you do it consistently, then over months and like years maybe, you will find that group of people who find those jokes funny. And personally मेरे को ये realize हुआ है कि even if I have like 2-3 people no who like the stories that I'm putting, तो जो मैं न्यूज़लेटर पे स्टोरीज डालता था उसमें दो कमेंट्स भी आ गए ना who say कि loved it or they got it, that is really enough. तो मैंने लाइक्स अपने लिए तो डिसेबल कर रखा है, मेरे को नहीं दिखता है कि कितने लाइक्स आ रहे हैं मेरे को किस पोस्ट पे। मेरे को सिर्फ एग्जैक्ट वो जो कम्युनिकेशन होता है ना कि दिस पार्ट दे रियली लव और दिस पार्ट दे डिडंट लाइक या जो भी, वो वर्क करता है मेरे लिए। एंड आई थिंक इट डजंट मैटर कि कितना बड़ा ऑडियंस है, व्हाट मैटर्स इज कि यू हैव दैट कम्युनिटी ऑफ पीपल हु गेट इट। एंड लाइक जोक्स इसीलिए वर्क करते हैं ना विद आवर फ्रेंड्स आल्सो, बिकॉज दे नो अस एंड दे नो व्हाट क्लिक्स एंड वी नो इट विल क्लिक विद देम। वही चीज हमें इंटरनेट पे ट्राई करना है अचीव करने का, एक्सेप्ट द मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। लाइक फिजिकली क्लोज नहीं है लोग आपके, हम्म। आपको ऑनलाइन एक बहुत 5 मिलियन वॉट एवर का भीड़ के थ्रू जाके अपना वो 10,000 भी सही ढूंढने हैं लोग। तो इट्स जस्ट डिफरेंट एंड वी हैव टू लाइक, सो आई रियलाइज कि of course there are people who have 10 million followers, who have itna insane TRPs on TV and millions of views on YouTube, but मेरे को वो नहीं फनी लगते, अगर काफी लोगों को लगते भी हैं। एंड मेरे को जो चीज फनी लगती है वो कुछ ही लोग होगा। इंडिया हैज 1.3 बिलियन पीपल ओनली, right? So there will be only maybe just 20,000 people who find funny what I'm doing or who like what I'm writing. तो मुझे 21,000 नहीं मिलने वाले, for example, right? So to figure that number to reach there is the task, but we can't have absurd expectations कि uh, like absurd comedy इंडिया में मॉन्टी पाइथन जैसा हो जाएगा जैसा यूके में वो चला, वैसा नहीं होने वाला, इट टेक्स टाइम। But So sometimes you will it may happen कि you want to say something, and the mass, the majority does not agree with this, and वो आके yeah, आपको आपको पता है कि वो आपके आके आपके पे हेट फैलाएंगे, और they can cause a lot of mm, problems to you, and sometimes yeah. you will have to compromise, but at the same time you want to compromising in a way that uh, your point is also proven, that their beliefs are also not hurt. So how do you go about doing Yeah, that? I think pragmatism है ये वाला चीज। एंड फॉर एग्जाम्पल बेहुदा बात पे मैं जो डाल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू, द गोल इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज कि कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है एंड दिस प्लैनेट इज गोइंग टू एंड एंड ऑल। एंड थोड़ा एक मेरे को भी कम्युनिटी चाहिए ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू पुट इन द वर्क। जैसे जस्ट हैविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल कि अभी जैसे दिख रहा है आर ए फॉरेस्ट कुछ फिर से कटने वाले हैं, एंड यू रीड दैट न्यूज एंड यू फील हेल्पलेस। वो नहीं फील करना है, किसी तरीके से ऑर्गेनाइज होना है विद अ लार्जर ग्रुप, एंड वांट कि उस ग्रुप में वेब डिजाइनर्स भी हो, उसमें हिंदी वाले पोएट्स भी हो, उसमें इन टाइप्स के आर्टिस्ट भी हो, बट देर विल बी ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो फुल नो ग्रास रूट पे क्या चल रहा है। सो वही डिविजन ऑफ लेबर रहे, बट हम सबका गोल सेम है कि थोड़ा ज्यादा खराब हो गई है सिचुएशन, क्लियरली थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मोस्ट ऑफ अस एंड वी हैव टू पुट देम ऑन ट्रैक। तो वो हेल्पलेसनेस से निकलने के लिए बेहुदा बात पे आई एम वर्किंग। एंड उसमें आई नो कि लाइक आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, and I want to say a lot of things about religion and the way the discourse around religion happens right now. But I also know if I have to be pragmatic about it, then capitalism is something much less closer to the hearts of Indians than religion. And capitalism is at the root of why religion is being used this way, for example, right? So why not just talk about that? Because if you can somehow figure out how to, do your part in weakening that, in weakening capitalism's grip on people's minds, religion का जो टॉक्सिक साइड का ग्रिप है वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि people are not like fundamentally looking
to hate their neighbors, वो तो कराया जा रहा है through money. तो the moment you are able to tell them कि देखो न्यूज मत देखो, वो अपने आप वो न्यूज से ही तो सीख रहे हैं हेट, वो चला जाएगा. तो देर आर लॉट ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक दैट जिनके बारे में आई हैव ओपिनियन, बट आई फील कि pragmatically देर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ. बिकॉज एक तो लोग बात कर रहे हैं और मेरे से बेटर तरीके से बात कर रहे हैं. Just like people like Kanhaiya Kumar, for example, I see him as addressing a big wide crowd, और वो बहुत अच्छे से उन लोगों तक वो मैसेज पहुंचा रहा है जो उनको सुनना चाहिए, रिगार्डिंग रिलीजन एंड कास्ट ऑल्सो, रिगार्डिंग द रूलिंग पार्टी ऑल्सो. तो मेरे को जरूरत नहीं है वो करने का, बट मैं आई कैन डू वट लाइक आई एम गुड एट, विच इज लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये कैपिटलिज्म और इंटरनेशनल मॉनिटरी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, और वो थोड़ा बेटर तरीके से लोगों को किसी तरीके से समझा पाए, सो दैट दे स्टॉप ट्रस्टिंग कॉर्पोरेशन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा एलियन कॉन्सेप्ट. तो आई थिंक वो मैं अपनी साइड से तो अवॉइड कर रहा हूँ ऐसे unnecessary बोलूंगा conflicts for me, because I don't have to pick that fight, because a lot of people are doing it, and उससे उसी फाइट को पिक करने का एक pragmatic तरीका भी है, which is underlying cause की बात कर ले रहा हूँ. So Word. that I'm saying. So actually, और अब उसमें भी आएंगे प्रॉब्लम. Of course there are people who will not understand it, but capitalism is not like that close to people's hearts. So there are a lot of people who take it really personally कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो about it. Socialism causes ये बर्बादी वो whatever, but I know कि वो propaganda से आ रहा है. तुमने वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा होगा maybe. That is easier for me to refute than whatever texts are existing for like 3000 years or something. तो है उधर से भी आएगा ऐसा vitriolic reaction, but it's easier to confront. so actually this happened कि there was CAA protests going on, and my cousin Yeah. had gone there. So ironically, some news guy picked him up, and he started talking about the finance behind the detention center. Earlier, everyone was talking Finance behind the. financials behind the detention centers. So earlier, everyone was Oh, talking okay. ki how this is wrong, but he picked the Yeah, fight on finance. exactly. Then Yeah, people started talking about कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा क्यों exactly. बर्बाद Yeah, करें. So I think right, that's a good approach. अभी मेरे को एकदम से आपने बताया तो याद आया. Uh, right. I think we are Yeah. short on time. So, what would be your message to the aspiring writers out there to, if they want to grow and if they want to write, how to go about it, and just any advice? Okay. I think खुद के लिए लिखो is the first thing that comes to mind. Write for yourself. Write to like find happiness. जो भी तुम्हारा like it depends on why you want to be a writer. To be honest, मेरे को writer self expression के लिए बनना था, और उस वजह से काफी मुश्किल हो जाता है when you are like working in a place where there is corporate bombarding happening. There is like बहुत ज्यादा नॉइज होना अगर आपके अराउंड, तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन एनीवे चला जाता है, एंड स्पेशली इफ देयर इज लाइक मनी दैट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन, so there are a lot of projects out there for writers that will pay you a lot of money, but is it it's not self expression, for example, for me. तो वो सब भी अवॉइड करना, उन ट्रैप में नहीं फंसना, because like I come from an engineering background, and like it's like अगर मनी वाला जॉब करना होता तो मैं इंजीनियरिंग जॉब पे फोकस करता, बट आई वांटेड टू लाइक ट्राई कि मैं राइटिंग में चला जाऊं नो मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स. तो वही वापस से फेस करना नाउ विद राइटिंग में भी ऐसा ऑप्शंस होता है कि यू गेट मनी, बट यू हैव टू राइट समथिंग दैट योर सोल डजंट एग्री विद. तो I think if your goal is self-expression, then write for yourself. Write to discover things about yourself, and then put it out in the world to test it, to see how what you feel, what you express about yourself. How much do other people hold true? The same thing. How much do they hold it dearly? So my advice to writers who want to get into like writing for self-expression would be this: see, write for yourself, and which means write without any walls. Write whatever you want and just put it out in the world. And बाकी लोग का, if your motivation is something else, like if you're writing for money, then persevere in that also. Like जिस भी reason से आप writing की field में आ रहे हो,
make sure that you like stick to it, or you look back and see, I am working towards it. Got it. Thanks a lot, Raghav. It's been a great Yeah. time. And I think Thank you, Ritik. this will help a lot of people understand the art of writing. Apart I from, don't know. We didn't. Yeah. sorry. What do you think? We didn't go into a lot of details also. We Yes. had like less time, but